Good morning, dear students. Welcome to the virtual class. Students, we are going to start new chapter of history today. This is chapter number 12, the Indian National Movement, on page 100 of your book. In this chapter, we are going to cover the following topics: rise of nationalism, formation of INC, that means Indian National Congress, moderates and radicals, partition of Bengal, Swadeshi and boycott movement. All right. Students, the Great Revolt of 1857 had a significant impact on Indian movement, the national movement of India. It inspired the Indians to unite against the exploitive British rule and led to the growth of national consciousness among the Indians. जो ग्रेट रिवॉल्ट मीन्स जो वॉर हुआ 1857 में it grew up and it gave the nationalism feeling in the heart of the Indians against the exploitive British rule. The movement also helped the Indian to realize the exploitive nature of the colonial rulers. However, there were many other factors responsible for rise in the nationalism of India. Not only the Great Revolt of 1857 is responsible for the nationalism in the heart of the Indians, but other factors were also important. We'll do it step by step. The next is rise of nationalism. The educated Indians started realizing the true nature of the British rule. See, education is a tool which can change anything. You all know about it. So what the thoda bahut education Indians को मिलने लग गया तो they start realizing that Britishers are doing very bad to them. They took several measures to make the common people aware of the exploitive British colonial rule. Their efforts finally bore fruit. जब इंडियंस एजुकेटेड हो गए तो उन्हें पता लगा कि ब्रिटिशर्स उनके साथ कितना गलत कर रहे हैं. सो मच ऑफ रॉन्ग थिंग्स आर हैपनिंग एट दैट टाइम. तो व्हाट दे डिड, दे गिव द एजुकेशन टू द अदर इंडियंस ऑल्सो और उन्हें अवेयर कराया कि व्हाट ब्रिटिशर्स आर डूइंग टू देम. So finally, they got the fruit of that. Some of the main factors that led to the rise of nationalism are discussed in the following sections. The first is the economic exploitation. The first reason is the economic exploitation. British rule completely ruined India. See, agriculture and farmers are considered to be the baseline for India. They are our heartbeat. So what they did, उन्होंने farmers, traders, artisans और middle class पे इतना heavy taxes लेवाई करना start कर दिया कि वो बुरी तरीके से exploit होने लगे. Heavy taxation के साथ साथ कुछ फेमाइंस भी तब आती थी, कभी अर्थक्वेक है और रेनफॉल प्रॉपर नहीं आई तो दे हैव टू द फार्मर्स एंड द इंडियंस द आर्टिशियंस आर वर फेसिंग द लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एट दैट टाइम एंड देयर वाज नो होप ऑफ एनी रिलीफ. Such worsened conditions became a fertile ground for the growth of nationalist consciousness among the Indians. So what they did, उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलने लगी तो दे ग्रू अप, उनको बहुत गुस्सा आया, दे गॉट एजिटेटेड, द इंडियंस आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म केम इन टू देयर हार्ट एंड इन देयर माइंड. सो दे थॉट कि वाई नॉट टू स्पीक अप अबाउट इट टू वर्सन द कंडीशंस फॉर द ब्रिटिशर्स एट द सेम टाइम. Continuing from the book, page number 101, Political Unification of India. What was that? The British rule came along with a set of uniform laws and idea of single nation and citizenship. ब्रिटिशर्स ने एक बिल्कुल यूनिफॉर्म लॉ बनाया सिंगल सिटीजनशिप का. इट पॉलिटिकली यूनिफाइड इंडिया फ्रॉम हिमालयस. उन्होंने हिमालय से लेकर north to Cape Town, south, Assam in the east and Khyber Pass in the west. The new consciousness of being a part of one nation fostered a spirit of nationalism. तब ये एक रूल रहा कि सबको सिंगल नॉर्मल सिटीजनशिप मिलेगी. तो और द प्लेसेस विच आर ऑल अराउंड फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर fostered the spirit of the nationalism among the heart of the Indians. Continuing next is one more reason which has led to the rise of nationalism among the Indians are the growth of railways and communication system. जैसे जैसे रेलवे और कम्युनिकेशन सिस्टम इम्प्रूव हो रहा था, इंडियंस एजुकेटेड हो रहे थे और ये चीज़ें भी इम्प्रूव हो रही थी, उस वजह से अपने थॉट्स को दूसरों के साथ शेयर करना इंडियंस के लिए ईजी हो गया था. इफ़ वन पार्ट ऑफ द इंडिया आई मीन द सम ऑफ द क्लैन ग्रुप ऑफ पीपल थिंकिंग अबाउट द नेशनलिज्म, उन्होंने अपनी आवाज़ न्यूज़पेपर्स और दूसरे थ्रू लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करी ताकि उनमें भी नेशनलिज्म का फीलिंग आ सके. सो द ब्रिटिश रूल सॉ द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम इन इंडिया. Railway, telegraph, postal services and newly paved roads brought people of different parts of India together and closer. This facilitated communication among the people, indirectly helped the leaders to organize the national movement on a pan-Indian basis. All right.
Continuing, the next topic is rediscovery of India's past. Rediscovery. From the second half of the 18th century, scholars began researching about Indian history and culture. Efforts of the scholars, who were the scholars, the educated class, the Britishers, Sir William Jones, Max Muller, and Cunningham, made people aware about the glorious past culture and heritage of India. It became clear that the Europeans had many things to learn from the glorious past of India. उनको कैसे उन स्कॉलर्स ने तब रिसर्च किया और उन्होंने देखा कि इंडिया यूज टू बी अ लाइक अ गोल्डन बर्ड. यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग वेल ऑफ थे, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, एवरीथिंग वॉज वेरी गुड. तो उनको पास से पता लगा कि दैट इंडिया हैड अ ग्लोरियस टाइम, फॉस्टरिंग अ सेंस ऑफ प्राइड एंड सेल्फ रिस्पेक्ट अमंग द इंडियंस. तब इंडियंस को ये नॉलेज हुई कि जो स्कॉलर्स हैं उनको ये पता लग गया है कि हमारी इंडियन कल्चर, हमारा हेरिटेज कितना रिच एंड इट इज़ वेरी हाई. सो नेशनलिज्म का फीलिंग, ऑब्वियसली द लव फॉर इंडिया तो ऑब्वियसली था कि उनके हार्ट में आना ही था. The next topic is growth of Western education. The introduction and spread of Western education among India's created condition for the growth of new ideas and consciousness. जैसे जैसे वेस्टर्न एजुकेशन प्रोपोगेट होने लगी इंडिया में, न्यू आइडियाज़ आने लगे, कॉन्शियसनेस बढ़ने लग गई लोगों में. दे केम टू नो, नाउ दे हैव लर्न व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ बैड फॉर देम. सो पीपल बिकेम फैमिलियर विद द मॉडर्न वेस्टर्न आइडियाज़ ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी. लोग obviously will they get educated, they will know how the love for their country and consciousness for the country and nationalism belongs to. So people became familiar with the modern ideas. They also got inspired by national movements the world over. जहाँ जहाँ भी नेशनल मूवमेंट हो रहा था, फ्रेंच में, यूरोप में, अमेरिका में, इंडिपेंडेंस के लिए, वॉर्स के लिए, वो लोग अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए कुछ कुछ लड़ाई कर रहे थे अलग अलग कंट्रीज. तो उनको जब वो एजुकेटेड थे तो गेट टू नो अबाउट द अदर कंट्रीज ऑल्सो, हाउ दे आर वर्किंग, हाउ दे आर ओवरकमिंग द प्रॉब्लम्स एंड व्हाट इज द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म गोइंग इन देयर माइंड. सो अ सेक्शन ऑफ एजुकेटेड इंडियंस स्टार्टेड बिलीविंग दैट इंडिया कैन यूनाइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉइटिव नेचर. जो एक सेक्शन जो पढ़ा लिखा था, एजुकेटेड इंडियन सेक्शन, केम टू नो दैट कि हमें कैसे, और उन्होंने दूसरे लोगों को भी एजुकेट किया, इंडियंस को एजुकेट किया कि हाउ एक्सप्लॉइटिव नेचर ऑफ ब्रिटिशर्स इज देयर. सो द स्प्रेड ऑफ इंग्लिश हेल्प लीडर्स ऑफ डिफरेंट रीजन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. They became aware of each other's feelings and problems. They also encourage a sense of oneness and unity. Next page, you can turn on the page number 102. This is growth of vernacular press. What is a vernacular press? The spirit of Indian nationalism grew with the development and support of the vernacular press. What was that? The period saw the publication of several newspapers and periodicals such as the Hindu, Amrita Bazar Patrika, Bengali, Kesari, Indian Mirror, Statesman, रस्ट गुफ्तार एंड दी बॉम्बे समाचार. ये सब न्यूज़पेपर्स हैं जो उस समय पब्लिश हुआ करते थे, बोथ इन रीजनल लैंग्वेज एज वेल एज इन इंग्लिश. रीजनल लैंग्वेज में भी आते थे और इंग्लिश लैंग्वेज में भी. दे पब्लिश्ड न्यूज़ एंड आर्टिकल्स क्रिटिसाइजिंग द एंटी इंडियन पॉलिसीज. मीन्स जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी होती थी रिलेटेड टू इंडियंस, उसमें उसका बहुत क्रिटिसिज्म आता था. मीन्स उसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता था. एंड ऑल्सो सजेस्टेड मेजर्स टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द इंडियंस. न्यूज़पेपर्स में ये सब चीज़ पब्लिश होने लगी. द पीरियड ऑल्सो सॉ द ग्रोथ ऑफ नेशनल लिटरेचर. नेशनल इंडियन लिटरेचर, रिच कल्चर, उसको पढ़ने के लिए बहुत ग्रोथ होने लगा क्योंकि लोग एजुकेटेड हो गए थे और उन्हें लगता था हमारे इंडियन कल्चर से अच्छा कुछ भी नहीं है. So the novel, plays and poems inspired patriotic feeling among the people. Novels उसमें जब if the group of people are educated, say they got very much inclined towards writing about the British rules and the exploitation the Indians were facing at that time. So say they wrote that feeling in the novels and the newspapers and magazines, जिनसे लोगों में nationalism का feeling जो था वो rise हुआ. Alright, the next is the British policy of discrimination. What was the British policy of discrimination? The Vernacular Press Act was passed by Lord Lytton in 1878. Law curbed the independence of Indian press, which was still in the nascent stages, and prevented the editor from publishing news and articles against the British government. देखिए, जो लॉर्ड लिटन थे 1878 में उन्होंने एक एक्ट पास किया तब उस चीज़ के लिए कि इंडियन न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसको, मतलब उसका क्रिटिसिज्म जो था वो बहुत पेपर्स में उस समय पब्लिश होता था कि दे आर डूइंग रॉन्ग टू अस. सो एक एक्ट पास हुआ जिसमें इस चीज़ के लिए प्रोपोगेट किया गया कि पीपल फ्रॉम ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी
प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ विच वॉज रिपील्ड बाय 1881 बाय लॉर्ड रिपन। और ये लॉ पास कराने के लिए बोला कि इट्स आर विश, ये इंडिया है, इट्स आर कंट्री, वी कैन पब्लिश एनीथिंग इन द न्यूज़पेपर, एंड इफ वी थिंक दैट द ब्रिटिश रूल्स आर exploiting us, they are criticizing us, so definitely we'll publish in the paper that these rules and regulations are not good for us. All right. Continuing from the book, another act passed by लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन जिन्होंने 1878 में एक्ट पास किया था, अनदर एक्ट पास बाय लॉर्ड लिटन, द आर्म्स एक्ट इन 1878, जिसमें इंडियंस को प्रिवेंट करा जाता था, दे आर फ्रॉम कीपिंग आर्म्स मीन दे कांट कीप पिस्टल्स एंड अदर वेपन्स along with them. This was also a cause of widespread discontentment among the Indians. The Ebert Bill passed by Lord Ripon gave the Indian judges the right to prosecute Europeans as well. This created resentment among the British residents in India. So I am repeating. The Albert Bill passed by Lord Ripon gave the Indian judges the right to prosecute European as well. उन्होंने Indian judges को ये right दिया कि जो यूरोपियंस इंडिया में स्टे कर रहे हैं वो उन्हें प्रोसिक्यूट कर सकते हैं, उन्हें प्रोसिक्यूशन में ले सकते हैं if they are doing something wrong. This created resentment among the British residents in India. इस रूल की वजह से, इस पास की वजह से ब्रिटिश रेजिडेंट्स, जो ब्रिटिशर्स इंडिया में रह रहे थे, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी. दे ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट मूवमेंट अगेंस्ट द बिल बोथ इन इंग्लैंड एंड इंडिया. उन्होंने इस बिल को ना पास होने के लिए प्रोटेस्ट किया. द बिल हैड टू बी अमेंडेड. द एंटायर कॉन्ट्रोवर्सी क्लियरली रिवील्ड द पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द ब्रिटिशर्स. और इससे ये प्रूव हुआ कि कितना रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द वाइट एंड द ब्लैक पीपल एंड द नॉर्मल पीपल आर गोइंग थ्रू दैट पीरियड. और ये जो था, इससे रिवील हुआ कि इनकी जो पॉलिसी है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, ब्रिटिशर्स की, दैट इज़ वेरी बैड फॉर द इंडियंस. ऑलराइट. So the next topic is the formation of the Indian National Congress. This I will be continuing in my next video. Till then you can go through the chapter. If there is any problem, we'll discuss in the Zoom. Till then, happy learning.